नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 13 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए. सो दिस इज मॉक टेस्ट 13 फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ and state level eligibility test exams. So let's start. Question 1. On a clear sunny day, the maximum depth till which photosynthesis can occur is A. 10 meter, B. 250 meter, C. 80 meter, या D. 600 meter. So clearly, this kind of depth of 250 meter or 600 meter would usually be in an ocean, and the photosynthesis depth, maximum depth is 250 meter. तो clear sunny day पे जो maximum depth photosynthesis की होती है वो होती है 250 मीटर, और जनरली हर नदी इतनी गहरी नहीं होती है, तो 250 मीटर जो है ये समुद्र के लिए होता है. Question 2. Assertion A. Arsenic 3 is more toxic than arsenic 5. We all know that this is correct. Reason. इसका reason क्या है? Arsenic 5 binds the sulfhydryl group more strongly than arsenic 3. So this is not correct. क्योंकि अगर arsenic 5 sulfhydryl group को ज्यादा strongly bind करेगा तो वो बॉडी में ज्यादा strongly bind होगा, तो टॉक्सिक ज्यादा होगा. तो क्लियरली ये सही नहीं है. So reason 5, arsenic 5 does not bind with sulfhydryl group more strongly. That's why this is false. So answer will be C. A is true, but R is false. Question number 3. Why is mercury hazardous to human health? A. Mercury is a pure metal and hard to digest. Okay. B. Mercury biomagnifies in the food chain. C. Mercury is water soluble and is absorbed in human bodies. Or D. It is heavy and not dispersed by wind. So clearly B is the correct option. Mercury biomagnifies in the food chain. And we all know what biomagnification is. That is, if 10 ppm of mercury is found in the fish, the bigger animal that eats that small fish will have a mercury concentration of say 20 ppm. And then if humans eat that bigger animal, they will have a mercury concentration of like 200 ppm in their bodies. So biomagnification क्या होता है? छोटी मछली के ने मरकरी को खाया, उसमें 20 ppm मरकरी है. किसी बड़ी मछली या बड़े जानवर ने उस मरकरी को खाया, उस मछली को छोटी मछली को खाया, तो उसमें 40 ppm मरकरी है उसकी बॉडी में. और अगर हम इंसानों ने उस बड़े जानवर को खाया तो हमारे बॉडी में वही मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन शायद 200 ppm हो जाए, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में जब जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उस हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, मैग्नीफाई होता है. उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. Increase in concentration of any or compound with increase in trophic levels of the food chain. That is biomagnification. So answer is B. Mercury biomagnify करता है. See, question 4. ये क्या है? Most suitable spectral region or wavelength range for studying urban heat island effect is. तो most suitable जो study range है urban heat island effect का, वो heat wave होता है, वो होता है क्वेश्चन 4 का 1 to 3 माइक्रोमीटर. डी होगा आंसर. ठीक है. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ मराइन पोल्यूशन? सो क्लियरली सुवेज, जब भी डोमेस्टिक सुवेज या इंडस्ट्रियल सुवेज जाएगा मराइन पोल्यूशन होगा. रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ ऑलवेज कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ऑयल स्पिल is a major cause of marine pollution, and oceanic mining. If you're mining something within the ocean, then also it causes marine pollution. So the option will be C. A, B, C, and D. Which of the following elements have longest oceanic residence time? Oceanic residence time is till what period of time this element remains suspended or dissolved in the ocean and doesn't settle down at the bottom. That is the oceanic residence time. तो कितने जो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा टाइम तक ओशन में सस्पेंडेड या डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, सेटल डाउन नहीं करता है बॉटम में, ओशन में रिसाइड करता है? तो कब? सोडियम. क्लियरली सोडियम क्लोराइड always in the ocean, suspended and dissolved form, and it doesn't settle down. So sodium chloride, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो कभी जमीन तले में बैठता ही नहीं, वो तो हमेशा सस्पेंडेड ही रहता है, डिसॉल्व ही रहता है. तो मैक्सिमम रेजिडेंस टाइम सोडियम का ही होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन आइसोटोप्स. क्योंकि आयरन, लेड और जो क्वेश्चन 6 में आयरन, लेड और कैल्शियम है, ये कभी ना कभी सेटल डाउन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना के जमीन पर सेटल डाउन हो जाता है, नदी तले में सेटल डाउन हो जाता है समुद्र के. पर सोडियम हमेशा सस्पेंडेड डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस टाइम सोडियम का मैक्सिमम. ठीक है. पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन आइसोटोप.
C13 is less abundant in vegetation than in ocean. This is the correct statement. C13 is actually less abundant in plants than in ocean. C12 is the most abundant in nature. Clearly C12 जो कार्बन आइसोटोप है वो most abundant नेचर में है और सबसे स्टेबल आइसोटोप भी है. C14 is absent in fossil fuels. ये थोड़ा इफी है कि है या नहीं सही. So this is an iffy statement. If it is correct or not, I don't know. Question D, C13 is used for carbon dating. So clearly C13 is used for carbon dating. This is a wrong statement because C14 is always used in carbon dating. We all know it. It's 10th standard chemistry. 10वीं में हम सब ने पढ़ा है कि C14 कार्बन डेटिंग में यूज होता है. तो C13 तो नहीं यूज होता, तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर होगा डी. डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. The ratio between the amount of radiation emitted by the earth up to the wavelength at which maximum radiation is emitted and total amount of radiation emitted by the earth is. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का की गुंजाइश नहीं है. इसका आंसर होता है ए 8 का ए 25%. Question 9. Assertion A. Temperature of sea water generally decreases with increasing latitude. और रीजन है surface layers of sea water tend to sink and contract in cold water. तो जो रीजन है surface layer of sea water tend to sink and contract in cold water, ये तो सही है. लेकिन ये जो रीजन है टेम्परेचर ऑफ सी वाटर जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, और सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पे होती है. तो सी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मैक्सिमम होता है. और जब हम लैटिट्यूड से बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ नॉर्थ और साउथ में, या फिर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, तो हर केस में लैटिट्यूड जो है वो बढ़ रहा होता है. 0 डिग्री के बाद वो होता है 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री होता है. तो लैटिट्यूड जब बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है क्योंकि हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट असर जो है बिल्कुल सही है. टेम्परेचर ऑफ सी वाटर जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड. इंक्रीजिंग लैटिट्यूड मींस अवे फ्रॉम इक्वेटर, तो इट डिक्रीजेस. सही है. पर जो सरफेस लेयर ऑफ सी वाटर टेंड टू सिंक एंड कॉन्टैक्ट इन कोल्ड वाटर, ये बात भी सही है, ये भी सही है. लेकिन ये जो रीजन है ये एक का एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इंक्रीजिंग लैटिट्यूड होता है, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड का मतलब डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो बढ़ता है और तब ठंडा होता जाता है, और इसलिए टेम्परेचर ऑफ सी वाटर घटता है. ना कि उसका सरफेस लेयर ऑफ सी वाटर के सिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो भले ये रीजन सही है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है ए को. तो इसका सही आंसर होगा बी. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. तो क्या होता है? What happens? Temperature of sea-water decreases with increasing latitude because as the latitude increases, we move away from the equator and the sea-water temperature decreases. So that is the reason why sea-water temperature decreases with increasing latitude. But the surface layer of sea-water tends to sink and contact with cold water. This is the correct statement, but this does not explain the assertion. Okay, so answer will be B. Question 10. For the CRJ 2011 notification, that is Coastal Regulation Zone 2011 notification, which are the following activities is permitted? Dumping of untreated sewage, never permitted. Construction of housing complexes is even not. This has got nothing to do with the coastal regulation zone. Infrastructure projects. This is also not easily permitted in the coastal zone. Traditional fishing and allied activities. This is easily permitted in the coastal zone. So this answer will be B. For the coastal regulation zone notification, traditional fishing and allied activities are permitted. Coastal regulation zone notification 2011 के अंतर्गत क्या परमिटेड है? ट्रेडिशनल फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज, क्योंकि अनट्रीटेड स्वेज को डंप करना या फ्लुएंट और सॉलिड वेस्ट को डंप करना सी में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी समुद्र के इर्द गिर्द परमिटेड नहीं है एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस जब डिफेंस का काम होता है. इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ये भी समुद्र के इर्द गिर्द परमिटेड नहीं है. सिर्फ ट्रेडिशनल फिशिंग और उससे जुड़े एक्टिविटीज ही समुद्र में परमिटेड है आसानी से. तो आंसर होगा बी. ठीक है, अब बढ़ते हैं 11. क्वेश्चन नंबर 11. इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे टॉक्सिक कौन है, उससे कम कौन है? ठीक है, तो इनका करेक्ट सीक्वेंस है ए. सबसे ज्यादा टॉक्सिक है आर्सेनिक, उसके बाद है कैडमियम, उसके बाद है मिथाइलिन क्लोराइड. ये होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, देयर इज नो नीड फॉर मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन. आर्सेनिक इज द मोस्ट टॉक्सिक, फॉलोड बाय कैडमियम, फॉलोड बाय मिथाइलिन क्लोराइड. Question number 12. A person working in a nuclear reactor is exposed to a beam of neutrons and receives a dose of 20 millirads per hour for 12 minutes. What would be the equivalent dose in millirams? तो इसका millirams में equivalent dose क्या होगा? इसका आंसर है B, 8 millirams.
सॉरी, मैंने अभी कैलकुलेट किया और आंसर होगा A4, क्योंकि 20 मिलीरैड्स का डोज है फॉर 1 आवर। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 20 मिलीरैड्स पर आवर मतलब 20 मिलीरैड्स बाय 60 सेकंड्स इनटू 12 मिनट्स, राइट? 20 बाय 60 इनटू 12, और इसका आंसर होगा 4। सो आंसर इज 4, करेक्ट आंसर इज 4, बिकॉज 20 millirads per hour is the dose. That is, in 60 minutes it gets 20 millirads of dose, and but this radiation only continues for 12 minutes. So if you multiply this by 12, you get 4, and that's the correct answer. Okay. And in all kinds of questions, learn basic arithmetic. That's always useful. Most common form of lead present in pesticides is, question 13 is lead arsenate. It is again a factual question. इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है। लेड का जो फॉर्म पेस्टिसाइड में प्रेजेंट होता है वो लेड आर्सेनेट होता है, और आर्सेनिक भी घातक है और लेड भी, और इसलिए पेस्टिसाइड जो है वो किलर होता है, और हमें उसको खाने से, पानी से या ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस से दूर रखना चाहिए। Which of the following statements is incorrect? Chromium 6 is highly toxic. Okay, ये तो सही है। Methyl mercury is the most toxic form of mercury. ये भी सही है, this is also true. Arsenic 3 is more toxic than arsenic 5. This is also true. Cadmium is a criteria pollutant. This is not true. This is the incorrect statement, क्योंकि cadmium criteria pollutant नहीं है. It's not a criteria pollutant. So this is a incorrect statement. Okay, because criteria pollutant is an air pollutant which at certain levels of exposure do not threaten human health and meet national ambient air quality standards. But when they exceed that threshold level, then they become a problem. तो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट वो होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं और एक सर्टेन लेवल तक वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, जब उससे एक्सीड करते हैं तब वो प्रॉब्लम करते हैं, और कैडमियम एयर पोल्यूटेंट तो है ही नहीं। क्वेश्चन 15, which of the following statements about benzopyrene is correct? Correct statement. It is a group 1 carcinogen. It is correct. It is a polycyclic aromatic hydrocarbons. This is also correct. Its molecular formula is C20 and H12. This is also correct. It has 4 benzene rings. This is actually not correct. So the option will be A, B and C. Option will be B. A, B and C. और अगर आप देखना चाहते हैं कि बेंजोपायरीन कैसा दिखता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, और वो तो ये है, ये एक जो रिंग होता है, this one ring is called one cycle and it has multiple rings, so it's called polycyclic, and the total number of rings is 1, 2, 3, 4 and 5 rings. So this is benzopyrene, and this is Wikipedia. It's all about, it's organic compound with formula C20H12. Structurally speaking, the colorless isomers of benzopyrene are pentacyclic hydrocarbons and are fusion products of pyrene and of phenylene groups. तो ये है benzopyrene. ठीक है, now you know about benzopyrene. Assertion A, radon is an inert gas and is radioactive. This is true. Reason R, all inert gases are radioactive. Clearly this is not true. All inert gases are not radioactive. तो ये तो सही है कि रेडॉन इनर्ट गैस है और रेडियोएक्टिव भी है, पर सारे इनर्ट गैसेस तो रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं, तो आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठ है। क्वेश्चन 17, द रेडिएशन फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल in a specified direction by a unit area source is called irradiance, radiance, excitance और radiant flux. कौन सा इसमें से सही है? इसका आंसर होगा बी, रेडियंस, कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से, एक स्पेसिफाइड एरिया में एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितना रेडिएशन फ्लक्स होता है उसको हम कहते हैं रेडियंस। रेडियंट फ्लक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो पहले ही यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, उसको रेडियंस कहते हैं। कितना लाइट एक यूनिट एरिया से 360 डिग्री एंगल एरिया में कहाँ जाएगा, वही जैसे बल्ब से या टॉर्च से लाइट निकलता है तो कितना लाइट वो देता है, वही रेडियंस है। सॉलिड एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब कि हर डायरेक्शन में, नॉट जस्ट एक प्लेन में, ए बी प्लेन में, ए बी एक्स वाई जी प्लेन में। ठीक है, which of the following isotopes of uranium does not undergo fission with low energy slow neutrons? We all know that uranium 235 is used in nuclear fission reaction, so clearly this is not the correct answer. U239, this is also an unstable isotope and this also can undergo fission, and U233 is also an unstable isotope. The most nuclear stable isotope of uranium is 238 and this does not go fission reaction, so this is the correct answer. क्योंकि जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है यूरेनियम का वो यूरेनियम 238 ही है और ये फिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेता क्योंकि न्यूक्लियस इसका बहुत स्टेबल है, तो यही होगा आंसर।
It does not undergo fission with low energy neutrons. ठीक है. Question 19, assertion A. The fundamental rule of dose response assessment, is to obtain a mathematical relationship between the amount of toxicant that a human is exposed to and the risk involved. ठीक है, तो ये तो सही है. डोज रिस्पॉन्स का हमें असेसमेंट ही इसलिए चाहिए होता है कि कितने डोज पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है ह्यूमन बीइंग्स को. ठीक है. Reason to apply dose response data obtained from an animal biopsy to humans, a scaling factor must be introduced. ये भी सही है कि जब डोज रिस्पॉन्स आप किसी जानवर में देते हो, क्योंकि ह्यूमंस पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हो, तो किसी गिनी पिग या बंदर में एक्सपेरिमेंट करते हो, और फिर उसके बाद एक ह्यूमन स्केलिंग फैक्टर कि अगर बंदर में इतना गुना डोज से इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो ह्यूमंस में कितने गुना डोज से कितना प्रॉब्लम होगा, एक स्केलिंग फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो ये भी सही है, लेकिन ए का जो रीजन है वो आर नहीं है. ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है एंड आर जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. तो ये होगा, आंसर होगा बी. बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए. क्लियरली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट about dose response, but R, the reason does not explain the assertion A. So answer will be B. Both A and R are correct, but R doesn't explain A. Which of the following is a major source of mercury pollution in India? Pesticide manufacturing is a major source of mercury pollution. Electrical and electronic gadgets may be a source of mercury pollution. Dental amalgam fillings maybe. I'm not sure about this. But coal-based thermal power plants, it's a major source of mercury pollution in India. Please do remember. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से मैक्सिमम मर्करी पोल्यूशन होता है. क्यों? बिकॉज कोल बर्निंग एमिट्स अ लॉट ऑफ मर्करी इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट मर्करी इज नॉट ट्रैप्ड बाय द करंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन इंडिया. अभी जो इंडिया में करंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम यूज हो रहा है उससे सिर्फ मोस्टली सल्फर और नाइट्रोजनस गैसेस और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ही कंट्रोल हो रहे हैं. मैक्सिमम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया गया है और थोड़ा बहुत सल्फर के लिए और नाइट्रोजनस गैसेस के लिए, ताकि एसिड रेन कंट्रोल हो सके. लेकिन मर्करी को कंट्रोल करने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी अभी तक थर्मल पावर प्लांट्स में इंडिया में यूज नहीं होता है, और इसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट जो कि इंडिया में हर जगह है उनकी वजह से मैक्सिमम मर्करी पोल्यूशन इंडिया में होता है. प्लीज डू नो दिस. एंड अगर मर्करी पोल्यूशन कंट्रोल के डिवाइस के बारे में आपको जानना है कि कौन सा टेक्नोलॉजी है, तो आई गिव द लिंक for the mercury control device in thermal power plants in the description box. So please go through it. But I'll tell you at the same time that that device is not being used in India currently, and hence thermal power plants are the major source of mercury pollution. Thank you. जय हिंद, जय भारत. और अगर आप इस वीडियो इस मॉक टेस्ट को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, ऑडियो पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व कर सकते हैं वीडियो सिर्फ देख के. ठीक है. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट के लिए, फ्री लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए और जॉब अपडेट्स के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. आई विल सी यू